Hi guys, welcome to Menua. Just 5 months are remaining for MBA CT 2021. So all the aspirants, those who are targeting for top MBA colleges, whether in Mumbai or Pune or the other part of Maharashtra, your admission will be totally dependent on what percentile you will get in MBA CT exam. But score wise, if we talk about out of 200, try to target 150 plus का score. So before your MBA CT exam, there are the other exam also like CAT है, NMAT है, IFT है, SNAP, TIS, CMAT. So this is what I always advise. Do have a backup plan in the same domain, which is nothing but your other MBA entrance. तो अगर आप CAT नहीं लिख रहे हो and you are targeting for CET only, so through CET you will get admission in Maharashtra based colleges. And जितने भी महाराष्ट्र में colleges है, they accept the CMAT का score also. Those are AICTE approved. तो सीटी लिख रहे हो तो सीमैट भी लिख लो यार, सिलेबस सेम है, सिर्फ जीके पे वर्क करना है आपको. सेम थिंग एनमैट, स्नैप और टिस, ये 5 एग्जाम्स आई रिकमेंड यू पीपल टू राइट बिकॉज स्नैप के थ्रू यू विल गेट एडमिशन इन पुणे विच इज नथिंग बट सिम्बायोसिस, एनमैट के थ्रू मुंबई कैंपस और टिस के थ्रू अगेन मुंबई कैंपस. सो अगर मुंबई एंड पुणे यहाँ से एमबीए करना है, सो आई रिकमेंड यू पीपल टू राइट दीज 5 एग्जाम्स: एनमैट, स्नैप, TIS, CMAT and CET. Although we will be targeting rigorously for MBA CET, but other exams का syllabus more or less same है, so वो भी exams appear करके रखो guys. And accordingly it is your choice whether you are writing CAT, IFT, ये सारे exams अगर लिख रहे हो तो. So as of now October is ongoing. नवंबर अपना CAT होगा, उसके बाद there are the other exam also till December. January में these 2 exams will be there, TIS, CMAT और XAT, ZAT भी होगा आपका. CET जो होगा वो आपका मार्च में होगा. ओवरऑल 5 मंथ्स का टाइम है अपने पास प्रिपरेशन को लेकर के, बट कंपटीशन इज वेरी हाई गाइस बिकॉज 1 लाख प्लस एप्लीकेंट अपियर फॉर द सीटी एग्जाम. मतलब कैट के बाद जो सबसे ज्यादा एप्लीकेंट एग्जाम लिखते हैं वो है एमबीए सीटी, उसके बाद आपका सीमैट, टिस, ये सारे एग्जाम्स आ जाते हैं. सो इन केस इफ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, लाइव क्लासेस बैचेस वी हैव लॉन्च. यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर एंड यू कैन ज्वाइन द लाइव क्लासेस बैच. Now coming to section, overall count 50 marks का होगा आपका, and in that also take question for 5 marks. Data interpretation से 25 question for 25 marks. So जो total count है वो आपका 20 question आएंगे 20 marks के लिए. इसमें से भी 5 question जो होंगे वो series के होंगे. जो pure maths होगा वो 15 question आएगा आपका for 15 marks. This is what the breakup of your quant section. मतलब CT के अंदर pure maths बहुत ही कम आएगा guys. So if you think कि मेरा maths weak है तो this is the best exam for you. So for data interpretation you should know all the type of the charts like table, pie chart, line chart, bar graph and mixed graph. For quant, dominating area is nothing but your arithmetic. So work more on the arithmetic like percentage, profit and loss, time, speed, distance and work, all these topics. And there are other topic also like number system, geometry, mensuration, ये सारे टॉपिक भी है. So when it's come to the quant and DI preparation, तो यार स्पीड अपने को अच्छी चाहिए, तो स्पीड कैलकुलेशन पे काम करना पड़ेगा. That is the first. Second is the concept for the quant. So the moment you get the question from the quant, you should know what concept, which topic and what is the shortcut for that. And for DI, you should know how to handle the DI in terms of the shortcut. And this will comes by lots of प्रैक्टिस गाइस. जितने वैराइटीज ऑफ डीआई सॉल्व करोगे उतना इंप्रूवमेंट आएगा. एंड सीटी इज द एग्जाम जहां पे अपने पास बिल्कुल टाइम नहीं है गाइस. इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम. सो यू हैव टू रन थ्रू द पेपर विद द मेंटल कैलकुलेशन. ट्राई टू improve your mental calculation, so this will enhance your speed and save your time also in the CET. Next is your English. Again 50 question for 50 marks, broadly divided into 3 parts: verbal, grammar and reading comprehension. Approximate 20 question for 20 marks. Grammar approximate 10 and rest 20 will be from verbal ability. So verbal के अंदर all the paragraph jumble, vocab sort of a question, fill in the blanks, ये सारे question आपको मिलेंगे यहाँ से. Grammar में error detection, sentence improvement and correction, phrase replacement, these are the topic you have to prepare from the grammar. For reading comprehension, you have to work upon your reading skill guys. So you have to read newspaper on daily basis. The Hindu I all time recommend to all my students. The Hindu is the good newspaper. इसका page 1 just to update with the current data and editorial page. Because while you are reading, you are improving your speed guys. और CT में अपने को speed ही चाहिए because we don't have a time. Second, you are working on your comprehension skill. That is also important. So to work upon your vocab sort of a question, you can refer the book Word Power Made Easy. This is the good book for the vocab. And majorly ये vocab आपको The Hindu अगर आप editorial पढ़ रहे हो वहाँ पे भी आपको मिलेंगे. So reading is the only solution. और जितना आप reading को enhance कर पाओगे, that will help you in your other area also, like puzzle वाले data को read करने में you will take less time. DI की question को read करने में. So there are lots of reading in CET exam guys. So you have to work upon the reading part. And finally comes core section of CET, which is nothing but the logic.
लॉजिक ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, एब्स्ट्रैक्ट 25 अलग से सेक्शन आएगा ये। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपको एनालिटिकल, क्रिटिकल एंड ट्रेडिशनल, सो कंबाइनिंग ऑल दीज 3 सेक्शन आपका लॉजिकल एरिया है जो 75 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। सो बेयर मिनिमम 30 क्वेश्चन फॉर 30 मार्क्स एनालिटिकल से एक्सपेक्ट कर सकते हो, 20 क्वेश्चन फ्रॉम द क्रिटिकल फॉर 20 मार्क्स एंड 25 क्वेश्चन from traditional logic. So traditional logic, I mean to say all the coding, decoding, syllogism, inequality, direction, these are all these topics. Sometimes it might happen कि analytical के question ज़्यादा आ जाएंगे, critical के कम आ जाएंगे, but this is what the rough breakup of your each section. So for traditional logic you have to work more on the shortcut. जितना shortcut पता होगा उतना आपके लिए better रहेगा, is because in CET we don't have a time. Critical के लिए you need to have a good understanding of the question and the data. Again, reading play very important role here. And finally comes your analytical, which is nothing but the puzzle and the arrangement part, and for that you require lots of practice, varieties of sets you have to practice for this area. And for abstract, it is very easy area, you can easily hit 20 plus ka score if you have a good command over the visual toggling. So once again guys, CET में अपने पास time नहीं है, so we have to build up our speed, we have to work upon the mental calculation and very important reading part. Alright, so we have left with the 5 month of preparation. In case if you want to join live session program for your CET preparation, kindly contact on 8828581455. And separately, if you want to join online program like books, mock section or the full course program, log on to manuedu.com/mbaentrance. Wish you all the very best for your preparation. Thank you.